हाय एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको एक साउंड डिज़ाइन टेक्निक बताऊंगा जो आप इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं एंड इन अदर जॉनर्स लाइक पॉप। सो एक बार सुन लेते हैं। तो आपने सुना, इट साउंड्स वेरी क्रेजी एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले मैं ये ऑफ कर लूँगा वेब टेबल जो इधर है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल एक मिडी ट्रैक ऑब्वियसली। अब मैं वेब टेबल एबल्टन का जो है उसको ड्रॉप कर लूँगा इस मिडी ट्रैक पे। तो हियर वी हैव आवर वेव टेबल। सस्टेन कम कर लेंगे एंड देन थोड़ा रिलीज़ भी। तो आप जो इधर ऑसिलेटर वन की जो सेटिंग्स देख रहे हैं, अभी इधर बेसिक शेप है एंड इधर बेसिक है, इधर आई विल गो फॉर डिस्टॉर्शन, राइट। एंड जो दूसरा ऑसिलेटर है वो भी ऑन कर दूंगा एंड उस पे आई विल गो फॉर समथिंग लाइक सॉटूथ, वेरी क्लासिक। ओके, अब एक आर्पिजिएटर लोड कर लेंगे एंड इसका जो स्टाइल है इसे मैं कर दूंगा प्ले ऑर्डर पे एंड जो रेट है आई विल गो फॉर समथिंग लाइक 1/12। अभी जो नेक्स्ट स्टेप है, एक मिडी क्लिप बना लेते हैं एंड इस पे मैं नोट ड्रॉ कर लूँगा। अभी आई विल गो फॉर सम बेस नोट, आई विल गो फॉर जी। एक बार सुनते हैं हाउ इट साउंड्स। द नेक्स्ट थिंग व्हाट विल डू इज़ कि अब हम जो ये फर्स्ट ऑसिलेटर है इसको थोड़ा मॉड्यूलेट करेंगे बाय यूजिंग एन LFO एंड LFO ड्रॉप कर देंगे। तो फॉर द मॉड्यूलेशन आई विल मैप दिस टू दिस फर्स्ट ऑसिलेटर एंड ये मॉर्फ होना शुरू हो गया है एंड इधर रेट को नोट्स पे कर लेंगे एंड आई विल गो फॉर 6, राइट। थोड़ा डेप्थ कम कर लेंगे, अराउंड जैसे 65 इज़ फाइन। तो क्या सुनते हैं। सो नेक्स्ट थिंग, एक एबल्टन का फेजर फ्लेंजर यूज़ करेंगे। I'll go for 2 and जो रेट है I'll go somewhere like 1.5, अमाउंट इज़ फुल। थोड़ा फीडबैक डाल लेंगे अराउंड 20%, थोड़ा सा वार्मथ एंड लेट्स हियर इट। तो आपने देखा कि साउंड मॉड्यूलेट हो रहा है अब और एंड इट साउंड्स गुड, राइट। What else you can do is we can play with the rate here. अभी 1/64 है, 48, 32, 16, 1/8, नॉचेस के साथ एक नाट, फीडबैक। And then we have flanger here, टाइम के साथ खेल सकते हैं।
Then we have Doppler here. एक बार बिना ड्रम्स के अभी हम प्लेइंग विद टाइम है डॉपलर में, फ्लेंजर है, फीडबैक बढ़ा सकते हैं। कैन प्ले विद रेट। सेम फेजर पे आप फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं, कैन सेंटर इट, spread it, right, with drums. So as you heard कि it sounds good. What else you can do? आप इधर आर्पिजिएटर के रेट के साथ खेल सकते हैं, राइट। गेट के साथ खेल सकते हैं। गेट कम होगा तो you'll get less sustained sound, and गेट बढ़ाएंगे तो you'll get more sustained sound. And another thing that you can do is कि जो LFO है इसे हम मैप कर सकते हैं इधर वेव टेबल की फ्रीक्वेंसी के साथ। And तो आपने देखा कि आप इन सारी सेटिंग्स के साथ खेल सकते हैं टू मेक इट चल अलॉन्ग विद योर ट्रैक, राइट। एंड देन इधर फेजर में यू कैन गो टू लाइक फेजर फ्लेंजर में यू हैव दिस फेजर है, यू कैन गो टू फ्लेंजर, यू कैन गो टू डॉपलर। You can map this gate पे भी। You can modulate sound in many ways, right, with the help of this LFO. You can map it to feedback, but पहले थोड़ा right. And you can do all sorts of things, and you can have fun making music. And what else you बाकी आप रिवर्ब ऐड कर सकते हैं, डिले ऐड कर सकते हैं, राइट। एक EQ8 डाल के आप EQ करें, राइट। रिवर्ब डाल सकते हैं। Let's just say console.
आप रिवर्ब या डिलेज को एज अ रिटर्न भी यूज़ कर सकते हैं। आई हैव अ रिवर्ब हेयर एंड इस रिवर्ब को ऑफ करके आई कैन सेंड इट टू द रिटर्न ट्रैक। सो आपने देखा कि इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग साउंड डिज़ाइन टेक्निक and you can use it in your songs and in other ways, right? So do let me know in comments आपको ये टेक्निक कैसी लगी, and अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो do like it, share it, subscribe to the channel. Thank you for watching. Cheers, take care.